Askacha desatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhaktavinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jai Srila Prabhupada Ki Jai Gaura Premanandi. All glories to assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada, all glories to assembled devotees. Gaura. Okay. Who's gonna translate this? So, yes, Prabhuji, I will translate. Okay. Shivan, how are you doing? I see your happy face in there. Yes, all Krishna's mercy, Maharaj. Guru, yes, Prabhuji. Okay. So today we have pure devotion free from motivation. So we're gonna discuss that part a little bit. So we're gonna discuss one of the highest teachings of bhakti, pure devotion from the selfish motivation. Why this is important? Why does Krishna value pure love above everything else? Go ahead. Yes, Prabhuji. श्री भगवान हमें बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्ति है उसका कितना महत्व है। शुद्ध भक्ति मतलब यानी वो कि बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के, मतलब हमारे किसी प्रकार का कोई उसमें कोई एक मोटिव नहीं है। इट इज अ मतलब वो पूरी तरह से निस्वार्थ है। भगवान की सेवा मतलब भगवान की भक्ति पूरे निस्वार्थ भाव से, उसे शुद्ध भक्ति कहते हैं और उसका इम्पोर्टेंस आज हम देखने वाले हैं। यस प्रभु जी। So here we're gonna discuss few of the things like pure devotion, motivation. So what is a motivation? Motivation is a reason behind the action. You see, that's what motivate you to perform a certain kind of activity. So we may perform different types of action with different motivations. We want to gain wealth. We want to become famous, receive respect, pratishta, to solve material problems, to attain liberation from suffering. See, this is all different levels of motivation. Okay, so none of this type of motivation, they're not wrong in themselves, but they are centered in what I'm receiving. You see, my motivation is what I'm getting out of the particular type of action that I perform. You see,
is generally is self-centered, and the society we live in nowadays, we bound to be a little bit self-centered. Otherwise, how can we live our life? But pure devotion, it asks a different question: how can I please Krishna? You see, how can I connect with Krishna? And by my activity, I make Krishna awareness, not just in me, but around me. Yeah. When pleasing Krishna becomes the only goal in our activities or motive, so devotion becomes pure. And this is what we are looking for. So, what is a pure devotion? The class definition is given by Rupa Goswami in Bhakti-rasamrita Sindhu, quoted in the Nectar of Devotion. Anya bilasita sunyam jnana karma di anavritam anukulena krishnanu silanam bhakti uttama. See, this is a verse we should study because it's a seed of knowledge. When by studying, the seed can grow in our mind and our heart. So this means the highest devotional service, you see, is that which is free from all material desires and then covered and obstructed by karma or jnana and performed favorably for the pleasure of Krishna. This is the gold standard of devotion. See, it's free from material desires. That's the highest devotional service. So why is pure devotion important? Because love, oh, I'm sorry. Yes, Ivan, yes, yes, I you have have to written, yes, you yes, have to yes, stop me. I forgot. yes, Prabhuji. I Actually, I was was so writing it here. I Yeah, was absorbed. I forgot. Okay, yes, please. यस प्रभु जी। सो आज हम देखने वाले हैं कि जो शुद्ध भक्ति है उसका कितना महत्व है हमारे जीवन में। और जैसे ही हम शुद्ध भक्ति करते हैं या कोई भी भगवान की सेवा करते हैं तो उसके पीछे एक मोटिवेशन होता है। तो वो मोटिवेशन के भी कई सारे लेवल्स है। जैसे कि हम जब भक्ति करते हैं तो हम हमारे जो मटेरियल प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करने के लिए भक्ति करते हैं, या फिर हमें बहुत ट्रेमेंडस वेल्थ चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, इसके लिए भी हम भक्ति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है मटेरियल लाइफ के, तो उसे सॉल्व करने के लिए अ, हम भक्ति करते हैं श्री भगवान की। तो ये मोटिवेशन है कि हम वो चीज क्यों करना चाहते हैं। और नेक्स्टली हमने देखा कि जो अल्टीमेट जो रीजन देखा कि मोस्टली अब इस इन सब मोटिवेशंस में भी जो हायर सब में हाई मोटिवेशन है कि मोक्ष के लिबरेशन के लिए हम भक्ति कर रहे हैं भगवान की, इस जीवन से मुक्त होने के लिए। पर श्रील रूप गोस्वामी जी हमें बताते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है उसका महत्व क्या है। शुद्ध भक्ति यानी मतलब केवल और केवल श्री भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला, किया उसका और कोई मोटिव नहीं है। मतलब जब हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की जो भी सेवा कर रहे हैं, उसका केवल और केवल श्री भगवान की प्रसन्नता यही उद्देश्य है। तो ये है वास्तव में शुद्ध भक्ति, जो कि हमारी जितने भी भौतिक इच्छाएं है उन सबसे वो फ्री है। मतलब उसमें किसी प्रकार का हमारा कोई भौतिक इच्छा नहीं है भक्ति करने के लिए। तो आज हम इसी का इम्पोर्टेंस जानेंगे कि जो शुद्ध भक्ति है, जो हमारा मतलब जो भगवान के प्रति हमारी जो सेवा है, निस्वार्थ सेवा, बिना किसी भौतिक इच्छा के, केवल और केवल श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो आज हम उसका महत्व देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं हमारे लाइफ में। यस प्रभु जी। So we're going to discuss a little bit why pure devotion is important. What is pure devotion? Why is important? Because
love cannot be purchased. Okay? If you say, I love you because you give me money, we don't feel that is right. Because love is an interaction that's totally voluntary between two people. I give somebody money, you may be grateful, thankful, and we, we like this person. We like a person that help us, like a doctor. We like people that, in different ways, but this intense love from the heart, it doesn't come by a material circumstances of give and take in the material platform. You cannot cause a pure love by interacting with material, you know, uh, items in this world. यस प्रभु जी। तो आज हम देखना चाहते कि जो शुद्ध भक्ति है उसका महत्व क्यों इतना महत्व है, क्योंकि हम देखते हैं कि शुद्ध भक्ति मतलब प्रेम मतलब वो नहीं कि अगर हम कोई हमें हमारी मदद कर रहा है और हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो तो एक लेवल पे हो गया। पर जैसे अगर हमें कोई धन हम सामने वाले व्यक्ति से कोई आशा रखते हैं, तो ये वास्तव में प्रेम नहीं है। ये वास्तव में भक्ति नहीं है। श्री भगवान की भक्ति मतलब भगवान से किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और ये जो भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति है वो हमारे बहुत ही अ, हमारे इंटेंस लव का जो ये भगवान के प्रति जो इंटेंस भक्ति है ये हमारे बहुत ही हृदय से आती है और किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा करने से नहीं आती। जैसे अगर हम भगवान से अगर आशा रख रहे कि हमें धन चाहिए या हम ये कर रहे हैं तो हम गिव एंड टेक अगर ये कर रहे हैं तो हम वास्तव में वो प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। क्योंकि जो भक्ति है वो हमेशा निस्वार्थ है और उसे उसमें किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, मतलब कोई भौतिक इच्छा का मिश्रित नहीं है उसमें। यस प्रभु जी। So, similarly, in the situation, if we approach God only when we want something, our relationship becomes conditional. Okay? Krishna is attracted not by wealth, scholarship, or power, but by sincere love. Now, I may have wealth, and I use this wealth for service to Krishna. I have distributed prasadam, I support the temple, I help the devotees with my wealth. That is devotion. You see, for Krishna, for the devotees of Krishna. I have scholarship. I'm a knowledgeable person. So I study and I know the intricacies of the Vedic knowledge, and I give this knowledge to people to understand Krishna in their own situation. See, so my scholarship, in a sense, is used for devotional service or a power, to have a government post or a company. I use the power I have to give, a measure of Krishna consciousness either to my employees or to the community that my factory, whatever it is, you see. So that become a measure of devotional service. यस प्रभु। सो जब भी हम भगवान के पास जाते तो हम किसी ना किसी प्रकार के कोई भौतिक इच्छा से जाते हैं, क्योंकि हम कंडीशनल सोल है। और जैसे कि हमने देखा कि श्री भगवान कृष्ण किसी प्रकार से मतलब कोई भी भौतिक वस्तु से हमारी ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि भगवान सभी जितने भी ऐश्वर्य है, जितना भी ऑपुलेंस है, वो सब भगवान का, और सब भगवान उन सब ऑपुलेंस के, सभी ऐश्वर्य के स्वामी है। हमारे पास अगर ज्यादा वेल्थ है, मतलब कई सारा हमारे पास धन है, तो हम धन से भी भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते।
कोई कहे कि हम हमारे पास बहुत सारा सुंदर है, भगवान हमसे भी अधिक सुंदर है, तो हम भगवान को सुंदरता से भी नहीं आकर्षित कर सकते हैं। पर भगवान को हम कैसे आकर्षित कर सकते हैं? तो जैसा कि हम देखते हैं कि अ, हम भगवान को भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति, उनकी सेवा करके हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। वो सेवा ऐसी होनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा। जैसे कि अगर मेरे पास कोई कुछ पैसा है, कुछ धन है, तो मैं उसको भगवान की सेवा में उसे उसका उपयोग करता हूँ। और अगर मेरे पास नॉलेज है, तो मैं उस नॉलेज का भगवान की सेवा में यूज करता हूँ, जैसे कि उस नॉलेज से मैं दूसरों को श्री भगवान के बारे में बताऊं। और इसी प्रकार से हम ऐसी सेवा कर कर हम भगवान को वास्तव में आकर्षित करते हैं। क्योंकि हम किसी भी भौतिक साधन से भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि अ, ये जो कुछ भी भौतिक है और आध्यात्मिक, सब कुछ सारा सब जगह भगवान की ही अथॉरिटी और भगवान की सत्ता, और सब कुछ भगवान का ही वास्तव में। अगर हम वास्तव में भगवान को आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमें भगवान की शुद्ध भक्ति और सेवा करनी चाहिए, बिना किसी भौतिक इच्छा के। यस प्रभु जी। So here we want to establish the personality of God in this verse of the Śrīmad-Bhāgavatam. This is one of the most quoted verses in Śrīmad-Bhāgavatam, which is the first canto, second chapter, sixth verse. Tavai pungsan parodharmo yato bhakti adoksaje. Ahaitukī pratihata yayatma suprasidati. So this means the supreme occupation from all humanity is loving devotional service into the Lord, which is causeless, without selfish motive, without motivation, material motivation, and uninterrupted, without interruption. By such devotion, the soul becomes completely satisfied. You see, this is the supreme occupation of all humanity. It doesn't say the occupation has to be a kshatriya or a brahmana or a sudra or a vaishya. It doesn't say the occupation has to be electrician, doctor, lawyers. It says that the occupation is loving devotional service, loving devotional service to the Lord. And it should be causeless, without selfish motive, you see. So that is basically the sanctioned movement of Lord Sri Chaitanya. Go यस ahead. प्रभु जी। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि जो भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति है, वो किसी भी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा या कोई भी एक मोटिव से नहीं होती है। और जो भगवान के प्रति जो प्रेममयी सेवा और भक्ति है, वो हमेशा कॉजलेस है। जैसे कि हम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है, उसमें देखते हैं कि अ, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अ, वे स्वयं भगवान है, और वे यहाँ पर शुद्ध भक्त की लीला कर रहे हैं। तो हम भगवान भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के से भी हम देखते हैं कि उनका जो भगवान के प्रति जो प्रेम है, वो पूरी तरह से निस्वार्थ है। उसमें किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं है। और यही वास्तव में सभी जो जीवों का जो ये है ना ऑक्युपेशन है, यही वास्तव में सबका स्वभाव होना चाहिए कि भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेममय सेवा। अ, और ये प्रेममय सेवा किसी प्रकार के भौतिक इच्छाओं द्वारा नहीं प्रेरित है। ये पूरी तरह से शुद्ध है और बिना किसी कॉज के, मतलब इसमें कोई मटेरियल कॉज नहीं है। यस प्रभु जी। So Krishna gives a promise to us. Okay, in the Bhagavad-gītā, 9, chapter 26, verse, he says, if one offers me with love, see, with love and devotion, a leaf, flower, fruit, or water, I accept it. This is, Krishna doesn't mention the price of the offering. He accepts the love, not the value of the gift. You see, and
I always thought this verse is so unique because here is the Supreme Lord. He asks us to offer him something that's going to please him, and this offering is so simple. Flower, you can find it anywhere. You go here. My wife goes for walking. Her sister goes for walking here, and there's flowers everywhere in the neighborhood. They have permission to pick in a certain place. So they pick flowers they bring here for our deities. Huh? If you offer um, a leaf, a leaf, you know, water, the Lord is satisfied. But He wanted to offer with devotion, with love. He takes the love. This is what He looking for. You see, He takes the love. Go ahead. Prabhuji. यस प्रभु। जैसे कि हम श्रीमद् भगवद गीता के 9 चैप्टर के 26 वर्स में देखते हैं कि श्री भगवान हमसे चाहते हैं कि वो हमसे क्या ऑफरिंग चाहते हैं। भगवान ने हमें भगवद गीता के 9 चैप्टर के 26 वर्स में बताया कि अ, अगर कोई मुझे प्रेम से भक्ति के साथ कोई पत्र या पुष्प या कोई फल या फिर जल अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि अगर हम देखो भगवान हमसे क्या चाहते हैं। पत्र पुष्प और ये फल और ये जल और ये सब हम अगर बाहर घूमने भी जाए तो हमें दिख सकता है कई सारे पेड़ है उसमें कई सारे पुष्प लगे हैं कई सारे फ्लावर्स लगे हैं। सो अगर हम सिंपली वो तोड़ के भगवान को ऑफर करते हैं तो तो भगवान उसके साथ वास्तव में चाहते क्या है। वो सब वस्तु तो नहीं चाहते भगवान बट वास्तव में क्या चाहते हैं। अगर हम वो ऑफरिंग प्रेम से मतलब डिवोशन के साथ भगवान को ऑफर करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो इंडीड भगवान हमसे भक्ति प्रेममय भक्ति चाहते हैं ना। ये तात्पर्य है इस श्लोक का। यस प्रभु जी। So pure devotion, it transforms the heart. Each one of us, we have a measure of transformation by the activities we do in devotional service. We get up in the morning, we have some program in our house, some chanting, we go to the temple, we take prashad. So we have some measure of the devotion. It becomes more and more clean and pure as we go along in our devotional service. So when devotion becomes free from selfish motivation, fear becomes faith, duty becomes joy. I'm not doing this for Krishna, chanting, cooking for Krishna, cleaning the temple. I'm not doing this as a duty. I start as a duty, but at the end becomes a joy, something that very happily I'm doing. And ritual, it becomes a relationship, and religion becomes love, because at the end, we have a natural love for Krishna, serving him in the temple. Like today, we went in the temple in Malaysia, here in Kuala Lumpur. They are extremely beautiful. And there's Radha Gokula Chandra. We just installed these deities. We did have Gauritai, Jagannath Baladev Subhadra, and now we install Radha Gokulananda a couple of weeks ago. So they are very gorgeous deities, and it's beautiful just to look at them. And then we took a beautiful prasad, which was like the Sunday feast. Oh, they're doing very great in prasad. So यस go ahead with you. यस यस प्रभु जी। सो जैसे कि हमने भगवद गीता के 9 चैप्टर में देखा कि भगवान हमसे प्रेममय भक्ति चाहते हैं मतलब निस्वार्थ भक्ति। वो किसी प्रकार के किसी भी हमारा कोई अल्टरियर मोटिव नहीं है उसमें। और जैसे कि हम देखते हैं जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो शुद्ध भक्ति मतलब वास्तव में हमारे हृदय का उसमें परिवर्तन हो रहा है। और जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं तो इससे हमारे जो हमारा भय है हमारे अंदर कोई किसी प्रकार को कोई भी भय या फियर कुछ भी क्यों ना हो वो एक एक प्रकार से वो फेथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो
दिस हाउ मतलब जब हम भक्ति करते हैं शुद्ध भक्ति, तो ऐसा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो हमारे ड्यूटीज है, जो हमारा कर्तव्य है, वो एक हमारे लिए उसे करने में एक आनंद आने लगता है जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि जो मलेशिया, जैसे प्रभु जी बता रहे कि जब जो मलेशिया का टेम्पल है उसमें अभी श्री श्री गौर निताई इंस्टॉल है, और श्री श्री अ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अभी वहां पे है, और अभी नए डीटीज वहां पर इंस्टॉल हुए हैं, श्री श्री राधा और गोपीनाथ जी। सो प्रभु जी वहां पे जो आते प्रसाद पाते, डिवोटीज के साथ एसोसिएशन करते हैं। सो दिस ऑल, ये सब जो कुछ भी है, ये वास्तव में एक पूरी तरह से एक जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए, तो ये वास्तव में हमारे हम भगवान जो भगवत आनंद है उसको अनुभव कर पाते हैं, जो ये भौतिक लेवल से बहुत ही परे है और दिव्य धरा पर है। यस प्रभु जी। So instead of asking what God can do for me, the devotee is asking, what can I do for Krishna? You see, the devotee is the initiator of devotion. What can I do for Krishna? And the best way also is how can I serve Krishna? The best way is to serve devotees. Das, anudas, anudas. You see, because the devotee is next to you. You see, we can interact, in a very personal way. And Krishna sometimes, because of our conditioning, we don't have this personal interaction yet. You see, oh, he's in the altar, he's like a king, he's like a very high personality. So the mercy of Krishna on us is the devotee of the Lord, because we can reach the devotee of the Lord. You see, we can interact with the devotee, we can serve the devotee that's more advanced, we can give friendship to those who are in the same level we are, we can give instruction to those who are coming up in the path and they are new in the program. We guide them, you see. And when we do this, Krishna becomes very happy, very, very satisfied. And when Krishna is satisfied, in the heart, that transcendental knowledge manifests. We become easy to perceive certain things that before was not able to perceive because of our conditioning. यस प्रभु जी। सो हम देखते हैं कि जो श्री भगवान के भक्त है, वो वास्तव में हमारे हमें वो भक्ति के इनिशिएटर है। मतलब जब हम भक्तों का संग करते हैं, तब हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। वो कैसे? जब हम देखते हैं कि भगवान का हम सीधे संग नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान एक ऑल्टर में विराजमान है, जैसे एक बहुत ही बड़े किंग की तरह। और पर भगवान की जो कृपा है वो हम तक कैसे पहुंचती है? भक्त के माध्यम से। भगवान उनकी कृपा जो है उनके भक्त के माध्यम से हम तक अ, हमें मिलती है। सो अ, अगर हम हमारे लाइफ में देखते हैं, तो जो हमारे पास वास्तव में जो भगवान की जो कृपा है, तो वास्तव में वो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग है। क्योंकि जब हम भक्तों का संग करते हैं, तो हम उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, तब हम उनसे डिस्कस करते हैं। सो ये जो ये आदान प्रदान है, इससे हम भगवान की कृपा को प्राप्त होते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका हमेशा ऐसा भाव होता है कि दासानुदासा मीन्स हम भगवान के सेवकों के सेवकों के सेवकों के सेवक हैं। ये ऐसा भाव होना चाहिए। सो तब हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, और यही भगवान को हम इससे हम भगवान को प्रसन्न करते हैं और भगवान की और कृपा को प्राप्त होते हैं। जो भगवान की कृपा है, वो भक्तों के माध्यम से आती है, और इसी तरह से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कृष्ण को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यस प्रभु जी। So, Prabhupada is emphasizing pure devotional service means serving Krishna without desire for personal profit, material gain, or even liberation.
यस प्रभु जी, Yes. कि श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि जो भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है वो किसी मटेरियल गेन के लिए नहीं है, ना कि वो किसी कोई धन प्राप्त करने के लिए या कोई सक्सेस प्राप्त करने के लिए, इसलिए हम भक्ति नहीं कर रहे। ये कोई मोटिव नहीं है भक्ति करने का। शुद्ध भक्ति हमेशा निस्वार्थ, बिना किसी भौतिक इच्छा की होती है। यस प्रभु जी। So here there is many stories that the Bhagavatam filled with example of pure devotion. There's some here I want to mention today. Prahlad Maharaj, right? He is one of the great examples. After the Lord appeared, Nrsimha Dev, and killed his father because he was a demon, he offered Prahlad any benediction. Think about this, the Lord offering any benediction, anything you can think of, the Lord can give you. And Prahlad, he replied, quite interesting, in a beautiful verse, in the 7th canto, 10th verse, 7th canto, 10th chapter, 7th verse. This is after the feast, the minds are still a little, Lord, oh Lord, I'm not a merchant doing business with you. Please do not tempt me with material benedictions. Basically, that's what Prahlad is telling the Lord. I don't want to do business with you. I ask some in return because, whatever I have done. And Prahlad Maharaj explained if serving the Lord for reward, that was not love, it was business. See? So instead, he prayed only that all material desires be removed from his heart. That is interesting prayer. You see, to remove material desires from the heart. So pure devotion means serving Krishna even when we ask for nothing in return. यस प्रभु जी, जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि कई सारे शुद्ध भक्तों का उसमें चरित्र बताया गया है। कई सारे शुद्ध भक्तों के हमने उसमें स्टोरीज देखे, मतलब वास्तव में जो हिस्ट्री है शुद्ध भक्तों का, उसमें हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम के जो 7वें स्कंद है उसमें हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन चरित्र को, उनका वास्तव में भगवान के प्रति कैसा भाव है, वो किस तरह से भगवान की सेवा करते हैं। और पूरी तरह से हम देखते हैं जब, तो उनका किसी प्रकार का कोई अ, अ, एक भौतिक इच्छा नहीं है भगवान की सेवा के प्रति। और जैसे कि हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के जो 10th चैप्टर है, उसमें हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जी का और भगवान के साथ जो कन्वर्सेशन है, कि जब भगवान प्रहलाद महाराज जी से पूछ रहे कि अ, तुम्हें क्या चाहिए प्रहलाद, तो उन्होंने प्रहलाद महाराज जी ने किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं की। और अ, उन्होंने ये भी कहा प्रहलाद महाराज जी ने कि मैं यहाँ आपके साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ। मतलब जो भगवान की जो शुद्ध भक्त होते हैं वे भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, पर उनके अंदर किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। भगवान के पूछने के पर भी उन्होंने किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा व्यक्त नहीं की। तो ये वास्तव में शुद्ध भक्ति का एक स्वभाव है। जो भक्त हम अपने जीवन में शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका जो हृदय है वो सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उनके अंदर किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। सो वास्तव में जो हम प्रहलाद महाराज जी के जीवन चरित्र से देखते हैं कि उनका जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो पूरी तरह से निस्वार्थ है। वो भगवान का हर समय स्मरण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। इतना क्रिटिसाइज होने पर भी प्रहलाद महाराज जी ने उनका जो
भगवान के प्रति जो निष्ठा है उसको नहीं, मतलब उनके जो निष्ठा है, उनकी जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति, वो उनसे नहीं हटे। तो यही यही वास्तव में शुद्ध भक्ति होती है कि किसी प्रकार की कोई भी, किसी भी परिस्थिति में भगवान का विस्मरण ना हो। और और जब हम भगवान की जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो अ, यद्यपि हमारे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छा है, पर जब हम शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हैं, जैसा कि हमें आचार्यों ने बताया है, 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, और श्री प्रभुपाद जी की किताबों को ध्यान पूर्वक पढ़ना, तो और भी भक्ति के कई सारे अंग है जैसे प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं। तो ये सब करने से हमारे हृदय की जो भौतिक इच्छा है वो सारे अ, हम मुक्त हो जाते हैं, उन भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में नहीं रहती। तो ये धीरे धीरे अभ्यास से होता है। सो ये वास्तव में शुद्ध भक्ति के लक्षण है। यस प्रभु जी। So another example, we have a devotee that I like very much, called Dhruva Maharaj, from motivation to pure devotion. So what happened to Dhruva Maharaj? You all know the story. He was rejected by uh, by his father. He want to sit in the lap of his father. His what they call the stepmother said, "No, only my son can sit in the lap of father. You not, say something very, you're not a good child. See, so you cannot sit in there. You have to take birth again in my womb, so then you can sit in the lap of uh, your father." So he become very upset. Dhruva, he has this Kshatriya spirit. He become extremely upset in his heart, you know. So he went to his mother. She was living in a simple place, and said, what should I do? He said, well, if you have a grievance, you should go to Lord Vishnu, and he can help you. So he asked, so where is Lord Vishnu? Lord Vishnu is in the forest. So he went to the forest. He was determined to to find Lord Vishnu in the forest. Meanwhile, he meets Narada Muni, and Narada Muni tried to dissuade him. Go back home. Your kid. What are you doing here in the forest? This is dangerous animals. This is not a place for you. But he was very determined. So Narada Muni, well, since you're gonna do anyway, so here's a mantra. Om Namo Bhagavate Vasudeva. He gave him the mantra through uh, Dhruva Maharaj. He started chanting and perform austerity. And finally, after a certain period of time, Lord Vishnu, he appears before Dhruva Maharaj, and he touched his head with his conch, and he want to ask Lord Vishnu, I want a kingdom bigger than my father. See, he has a dad issue in here. So he wants a kingdom bigger than his father, which already was very big. Uttapanada, I think, was his father. Just to see, I can get my own kingdom here. Just like competition there. But when the Lord touched his head with the conch, what did he say? I was looking for pebbles, and I find now a pure jewel in your presence. You see, actually, I don't want anything. I just want to serve you. Forget about this kingdom. This is no good for me right now. You see? But to finalize the story, the Lord is so merciful. He gave him the kingdom anyway, and that is in this system called Pole Star. That was Dhruva Maharaj. That's where he stayed. You see? So we see that he gave a very high position in this world.
Ready? यस यस प्रभु, यस प्रभु। जैसे कि हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल जो ध्रुव महाराज जी का है, जिसमें हम ध्रुव महाराज जी का जो जीवन चरित्र है उसमें देखते हैं, जो श्रीमद् भागवतम में विस्तार पूर्वक बताया है। जब ध्रुव महाराज जी, जब उनके जो पिता है उनके गोद में बैठना चाहते थे, पर उनकी जो माता थी, जो उनकी जो सौतेली माता थी, तो उन्होंने कहा कि तुम वास्तव में यहाँ पर बैठने के योग्य नहीं हो। अगर तुम्हें यहाँ पर इनकी गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना होगा। सो जब ऐसे वचन उन्होंने ध्रुव महाराज जी ने उनके माता से सुने, तो उनको बहुत ही हृदय में उनके बहुत ही दुख हुआ। और उन्होंने उनके पिता को भी देखा कि उनके पिता ने भी उनको गोद से उतार दिया है, और उनके जो पिता है उनके प्रति, उनके जो पिता है, जो ध्रुव महाराज जी के, उनके वो कोई किसी प्रकार का कोई प्रेम नहीं दिखा रहे ध्रुव महाराज जी के प्रति। और ध्रुव महाराज जी ये सब देख रहे हैं, जो उनका ये जो अपमान हो रहा है, और ये सब उनको जो उनके जो माता ने उन्हें ऐसे वचन कहे, ये सब से वे बहुत ही पीड़ित हुए। और वे उनकी जो जो वास्तव में जो माता है, उनके पास गए और उनसे उन्होंने कहा कि उनको उन्होंने ये सब कुछ जो प्रसंग, ये जो कुछ भी हुआ, वो उनसे कहा। और अ, फिर उन्होंने कहा कि मुझे मतलब जो उनके हृदय में जो दुख था, और उनकी जो इच्छा थी कि जो उनके जो पिता है, ध्रुव महाराज जी के पिता, उनसे भी बड़ा साम्राज्य उन्हें प्राप्त हो, ऐसे ध्रुव महाराज जी की इच्छा थी। क्योंकि वे उनके पिता को दिखाना चाहते थे कि ये देखो, मेरा भी ये साम्राज्य जो आपसे बड़ा है। तो जो उनकी जो माता थी, उन्होंने अ, कहा उनसे कि ध्रुव, अगर तुम्हें वास्तव में कुछ चाहिए तो तुम्हें विष्णु के पास जाना चाहिए। और विष्णु जंगलों में है, मतलब फॉरेस्ट में है, ऐसा ऐसा उन्होंने उपदेश दिया था ध्रुव महाराज जी को, उनकी माता ने। तो ध्रुव महाराज जी वास्तव में बहुत ही, उनकी एज बहुत ही छोटी थी, वो केवल 5 ही वर्ष के थे। और वे इतने डिटरमाइंड थे, ये सब जो हुआ उनके साथ, वो उससे बहुत ही दुखी थे। और बहुत ही मतलब वे बहुत ही डिटरमाइंड हो चुके थे कि उन्हें अगर संपत्ति चाहिए तो बहुत ही ज्यादा चाहिए, जो उनके पिता से भी बहुत बड़ी है। पहले तो उनका पिता का जो साम्राज्य था वो पहले से ही बहुत बड़ा था, और वे उनसे और भी बड़ा साम्राज्य चाहते थे, कि क्योंकि वे दिखाना चाहते थे उनके पिता को कि ये मेरा साम्राज्य है। क्योंकि उनके पिता ने उनका बहुत ही तिरस्कार किया था, मानो उन्हें त्याग दिया हो, या उन्हें पुत्र के रूप में ऐसे स्वीकार नहीं किया। तो जब ध्रुव महाराज ने उनके माता से श्रवण किया उन्होंने कि तुम्हें विष्णु जंगल में मिलेंगे, तो वे जंगल की ओर प्रस्थान करे, घने जंगल की ओर। वो केवल 5 वर्ष के थे ध्रुव महाराज, और वे जंगल की ओर प्रस्थान करे। और जब वे जा रहे थे, तब वे उनको भगवान की खोज करनी थी, मतलब विष्णु कहाँ है, वे कृष्ण कहाँ है वास्तव में। वे वो जंगल में चले गए और वे ढूंढ रहे थे कृष्ण को, विष्णु को। तो फिर वहां पर भगवान की प्रेरणा से नारद जी, क्योंकि जो ध्रुव महाराज जी की जो इच्छा थी भगवान से मिलने की, वो क्योंकि भगवान परमात्मा रूप से सबके हृदय में स्थित है, और वे सब देख रहे हैं। तो जब भगवान, उनकी इतनी दृढ़ इच्छा थी, जो इतनी दृढ़ निष्ठा थी कि उन्हें भगवान से किसी भी कंडीशन में मिलना ही है, तो उन्होंने उनके शुद्ध भक्त जो नारद जी है उनको वहां पे ध्रुव महाराज जी के पास भेजा। और नारद जी ने वास्तव में जब ध्रुव महाराज जी के पास गए, तो उन्होंने पहले जो नारद जी है, उन्होंने जो हमारे ध्रुव महाराज है उनका डिटर्मिनेशन चेक किया कि वास्तव में कितने निष्ठावान है, इनकी वास्तव में निष्ठा है या नहीं है। तो जब नारद जी ने ध्रुव महाराज जी से पूछा कि अ, उनसे कहा कि तुम यहाँ पे इस जंगल में क्यों आए हो, ये जंगल वास्तव में बहुत ही भयानक जगह है, तुम केवल 5 वर्ष के हो, और खेलो कूदो, और ये सब जो हुआ इसे भूल जाओ, ये तुम तो अभी बच्चे हो। तो ऐसे कहकर वे उनको वापस भेजना चाहते थे नारद जी। पर जो ध्रुव महाराज जी थे, वे उनको उनसे कहे कि वास्तव में मैं विष्णु से, कृष्ण से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। और वे बहुत ही डिटरमाइंड थे, आपको अगर यदि पता है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज आप मेरा रास्ता छोड़ सकते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेशन था ध्रुव महाराज जी का,
नारद जी ने ये डिटर्मिनेशन पहले तो ये चेक किया, ये जो निष्ठा थी उनका, उन्होंने देखा ये वास्तव में निष्ठा है इसमें। तो फिर नारद जी ने, ठीक है मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ, भगवान का नाम देता हूँ, तुम उसका नाम, वो नाम जप करो, और तुम्हें, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण तुम्हें कैसे मिलेंगे। तो भगवान, उन्होंने फिर नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका निरंतर जप करने के लिए कहा ध्रुव महाराज जी को। और ध्रुव केवल 5 ही वर्ष के थे, और उन्होंने वो तपस्या की, भगवान का नाम जप किया निरंतर, कई समय तक उन्होंने भगवान का नाम जप किया। जैसा कि नारद जी ने उन्हें बताया था, जैसे कि नारद जी ने उन्हें विस्तार पूर्वक बताया था कि तुम्हें किस तरह से नाम जप करना है और कैसे भगवान की सेवा करके तुम के भगवान को पा सकते हो। तो वैसे तो हृदय में ध्रुव महाराज जी की इच्छा थी कि उनके, वे चाहते थे कि उनके जो पिता है उनसे भी बड़ा साम्राज्य, 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा बड़ा साम्राज्य उन्हें प्राप्त हो। तो ये इच्छा थी उनकी, और वे भगवान से मिलने के लिए वो तपस्या करने लगे, वो नाम जप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब वे निरंतर ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब निरंतर जप कर रहे थे, तो कुछ समय बाद जब उनका बहुत ही ये तपस्या पूर्ण हुई, मतलब बहुत ही इंटेंस उन्होंने भगवान के लिए साधना की, तपस्या की, नाम जप किया, जिससे भगवान उनके सामने प्रकट हुए। और जब भगवान प्रकट हुए, श्री भगवान कृष्ण उनके चतुर्भुज रूप में, विष्णु फॉर्म में, तब हम देखते हैं जो ध्रुव महाराज जी अ, दंडवत प्रणाम करते हैं भगवान को, और भगवान से प्रार्थना करना चाहते, भगवान की स्तुति करना चाहते थे। तो भगवान ने अ, जो जो भगवान चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु, नारायण, कृष्ण वहां पर विराजमान है, उनको दर्शन दिए, और भगवान ने उनका जो शंख है, जो वो उनके जो शिष्य उससे स्पर्श किया। जो भगवान विष्णु है, उन्होंने उनके जो शंख है उससे ध्रुव महाराज जी के शिष्य को स्पर्श किया, जिससे उनके जो पूरा ज्ञान उन्हें पूरा पूरी तरह से, मतलब वो भगवान की स्तुति करना चाहते तो वे स्तुति करने लगे। तो जब वे भगवान की स्तुति कर रहे थे, तो उसमें वे कह रहे थे श्री भगवान से, विष्णु से, जो वास्तव में कृष्ण ही है, वे कृष्ण से कह रहे थे कि मैं वास्तव में पत्थर की मांग कर रहा था। अब वो उनकी डिजायर रखने ही वाले थे, मतलब जो उनका जो उनकी जो डिजायर थी कि उनको उनके पिता से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त हो, किंगडम प्राप्त हो। तो वो ये कहने लगे, उनके डिजायर को ऐसे व्यक्त करने लगे कि मैं वास्तव में तो पत्थर और ये सब मिट्टी की मांग कर रहा था, मुझे तो वास्तव में आप कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी सेवा करनी है, आपकी भक्ति करनी है। तो जब भगवान के उन्होंने दर्शन किए ध्रुव महाराज जी ने, तो उनके हृदय में किसी प्रकार की कोई वो जो भौतिक इच्छा है वो नहीं रही। पर फिर भी जो भगवान कृष्ण है, श्री भगवान, जो विष्णु रूप में भगवान प्रहलाद महाराज जी को दर्शन दिए, सॉरी, ध्रुव महाराज जी को दर्शन दिए। तो फिर भी जो ध्रुव महाराज जी की जो इच्छा है, जो उन्हें जो किंगडम चाहिए था उनके पिता से भी बड़ा, वो भी दिया। और जो ये तो दिया भौतिक जगत में, और उनको हमेशा नित्य धाम ये भी दिया, जो पोल स्टार है, जो एक अवार्ड दे दिया, जो पूरा बैकुंठ का रेप्लिका, पोल स्टार जो ध्रुव तारा है, मीन्स वो एक लोक है, ध्रुव लोक। तो उसमें भी भगवान ने वो भी दे दिया। तो अ, जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तो उनकी किसी प्रकार जो भौतिक इच्छा थी वो पूरी तरह से चली गई थी। और वे जब भगवान की स्तुति कर रहे थे, उन्होंने उसमें कहा कि मैं तो वास्तव में पत्थर और मिट्टी मांग रहा था, मुझे तो अब वास्तव में एक बहुत ही अ, रत्न मिल गया है। तो जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, और वे उनकी किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं रही, बट फिर भी भगवान ने उनकी सारी इच्छाएं पूरी की, और उन्हें शुद्ध भक्ति से भी ब्लेस किया। और यस यस, यही यही था जो हमारे ध्रुव महाराज जी उनका पास टाइम। यस प्रभु जी। It was a long one, Prabhuji. यस प्रभु जी। Okay, now we have the third example, which is Sudama Brahmana. Okay, it's one of my favorite stories, right?
Sudama, he was a student with Krishna, and remember they got lost in the forest. They are collecting wood for the wife of the Gurudev. They got lost, and they spent the night in the forest, in the dark, because the search party that was looking for them couldn't, do much at night. So that created a bond of friendship. So later on, Krishna went to Dwarka, and Sudama was living, in very humble dwellings with his wife. And wife, is always pushing the husband to get economic development. But the problem was that Sudama Brahmana was really poor. He has very, ripped clothes, and, they were like suffering there, So the wife said, hey, you're friend with Krishna. Why don't you go ask him for some benefit, some prosperity, some money, because look at the situation. She keep bugging him. So finally, Sudama, he relented, not because of the money, because it's a good opportunity that I'm gonna see my friend. So he decided to go, but before he goes, he said, "Well, I'm gonna bring Krishna something, right?" So the wife gave him chira, a little bit of chira. He put in his belt in the dhoti, and he start going to Dwarka. So he gets there in the palace. He's a brahmana, so the guards let him go. He went right straight to the Krishna's chambers, and Krishna saw him. He was so happy. Sudama, my friend. He get off of the throne, put Sudama in there, and wash his feet. You see, Krishna is amazing. He's the perfect host. He loves Sudama. We all love Sudama. Such a humble personality. So they were there, they were talking, and time passed, and Sudama said, "Okay, I should go back. And I have some gifts for you." So no. Krishna said, you come here. You must have a gift for me. I know you have a gift for me. Sudama, he was shy because I have Krishna. Look at this, so opulent. He can have anything. I have a little bit of chira. He's gonna laugh in my face. So he doesn't want to give. So Krishna, he know the heart of his devotee. You have a gift for me. So he reached and took from his dhoti. He has this belt thing that he put in the dhoti. He took some in the hand, and he took a little bit, put in the mouth. It's so delicious. He's about to take the second morsel. Then Rukmini said, "My Lord, please stop. With one morsel, you're so pleased that I give so many benefits for Sudama. If you take another morsel, I don't have the prosperity to give to this Brahmana, in exchange, because I'm poor. Bank is zero balance." So Krishna, okay. So Sudama, he went back, and in the middle of the way, oh my God, I forgot to ask Krishna for some benefit, some money, some help. I forgot to ask. I was so, in this, talking to my friend. But when he got back to his village, his house was a beautiful house. His wife was dressed beautifully. Everything was, his children looking good, and it was a different setup. So then he understood that Krishna has blessed him, you see. So Sudama, he was not interested in any material thing. He got it anyway, you see. And this is the beauty of Sudama, because he didn't demand anything from Krishna. He just enjoyed his friendship. Go ahead, Prabhuji. यस जैसे कि अब हम जो एक एग्जाम्पल है जो सुदामा जी को हम जो भगवान के प्रति उनकी जो मित्रता है
और भगवान के प्रति जो उनका शुद्ध भक्ति है, उनका जो सुदामा जी का जो जीवन चरित्र है, उसमें भी हम देखते हैं कि जब वे बहुत ही मतलब जब उनके चाइल्डहुड में सुदामा जी भगवान के साथ मतलब उनके फ्रेंड्स थे, और जब अ, वे जब सुदामा जी वास्तव में एक पूरी तरह से बहुत ही पुअर ब्राह्मण थे, और वे द्वारका से बहुत ही दूर रहते थे। और जब अ, उनके पत्नी ने उनसे कहा कि आपके जो मित्र है वो तो द्वारकाधीश है, वो वास्तव में हमारी मदद कर सकते हैं, अगर तुम जाओ उनसे मदद मांगो। तो वैसे तो सुदामा जी की कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, और वे उनके जो पत्नी के उन इतना उन्होंने रिक्वेस्ट करने पे, उनके वाइफ के इतना रिक्वेस्ट करने पे सुदामा जी द्वारका अ, धाम जाते हैं और कृष्ण से मिलने जाते हैं द्वारका में। तब जो जब वो जाते हैं तो भगवान के लिए चीड़ा और जो ये है, इट इज मतलब ये एक काइंड ऑफ ये गिफ्ट के फॉर्म में वो लेके जाते हैं चीड़ा को। और जब वे द्वारका पहुंचता है, तब जब भगवान वो ऐश्वर्य देखते हैं भगवान का, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं, और जैसे ही भगवान सुदामा को देखते हैं, कृष्ण जैसे ही सुदामा को देखते हैं, ओ मेरे मित्र सुदामा तुम आ गए हो, तो फिर वे उठ के गले लगाते हैं सुदामा जी को। और जब उन्हें फिर एक सिंहासन पर बैठते हैं, और वे सीधा सुदामा जी के चरणों में बैठ के उनके चरणों को अपने जल से उनके चरणों का उनके चरणों का अभिषेक करते हैं। सो इस प्रकार से वे भगवान उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो फिर जब उन्होंने कई सारे भगवान सुदामा जी ने कई सारे बातें किए भगवान के साथ, कृष्ण के साथ, तो फिर जब सुदामा जी जाने वाले थे, उन्होंने तो कुछ कहा नहीं था उनकी क्या इच्छा थी, और ना ही उन्होंने उनसे मदद मांगने की, ऐसे मतलब डायरेक्टली उनसे नहीं मांगा कुछ। फिर जब वे जा रहे थे, तब जो कृष्ण थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाया ही होगा। सो मुझे पता है तुमने क्या, क्योंकि वो देने से थोड़े शर्मा रहे थे सुदामा जी, क्योंकि भगवान का इतना सारा ऐश्वर्य है, मैं ये क्या ही लाया हूँ भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। तो फिर वो फिर भी कृष्ण उनसे कैसे तैसे वो जो गिफ्ट लाया था वो लेते, और जब भगवान उसे पाते हैं, तब भगवान जब वो पा रहे, तो बहुत सारे अल्टीमेट बहुत सारे बेनिफिट्स जो सुदामा को वो दे रहे थे जब वे पा रहे थे। तो फिर उतने में ही जब वो सेकंड बाइट लेने ही वाले थे, तब अ, रुक्मिणी जी आ गई वहां पर, और रुक्मिणी जी ने रोक दिया। अब मेरे पास वास्तव में कुछ देने के लिए नहीं है, क्योंकि सारा सब कुछ प्रॉस्पेरिटी हमने सुदामा जी को पहले से ही दे दिया है, अब हमारे पास क्या बचा। तो फिर जो सुदामा जी मतलब जो कृष्ण है, वो वास्तव में बहुत प्रसन्न होते हैं सुदामा से। और फिर वे जब सुदामा जी वापस जब जाते हैं उनके गांव, तो वे देखते हैं कि वे उनके वो वे देखते हैं कि भगवान ने कृष्ण ने हरि बोल। Anybody there? Hare Krishna. um, Who is there? Can you hear me, everybody? Yes, We lost. Prabhuji. I think Prabhuji's network is yeah, gone. We lost our Shivan, man. uh, Come back. yeah, am I audible, Prabhuji? You okay? Should I continue? Krishna, yeah, Okay. yeah, So we're almost at the end anyway. So, uh, so the test of pure devotion is this: if Krishna give me everything, I still worship him. If Krishna take everything from me, I still worship him. If Krishna place me difficulty,
I still worship him. You see, that purity of motivation. And I finish with a verse from the Śrīmad-Bhāgavatam, 2nd canto, 3rd chapter, 10th verse. This is a very famous verse. You can take note of this. Akama sarvakamova. If you have no desire, akama, or you have sarvakama, all the desires, moksha kama udaradrig. If you want a liberation, trivena bhakti yogena yajata purushan param. A person who has no material desires, akama, who has all material desires, sarvakama, or one who desires liberation, moksha kama, should, if he is intelligent, worship the Supreme Personality of God by rendering intense devotional service. Even if you have material desires, you worship Krishna because you're approaching the right source. Shivan, Yes, can you do Prabhuji. that? Yes, Prabhuji. We're almost there. Yes. जैसे कि हम देखते हैं कि जो शुद्ध भक्ति है वास्तव में किसी प्रकार से कोई मोटिव के साथ नहीं है, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा के साथ नहीं होती है, वे पूरी तरह से निस्वार्थ होती है। और ये वास्तव में शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई भौतिक इच्छा नहीं है। मतलब अगर परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, अगर जो हम भगवान ने हमें इतना सब ऐश्वर्य प्रदान किया है, अगर भगवान उससे सब वापस भी लेते हैं तब भी हम भगवान की जो शुद्ध भक्ति है, तब भी हम भगवान की शुद्ध भक्ति, भगवान की सेवा करेंगे और करते हैं। और भगवान यदि हमें सब कुछ ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं तब भी हम भगवान की सेवा करते हैं। और यदि हम भगवान हमें किसी प्रकार की कोई मुश्किल स्थिति में अगर हम ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमें रखते हैं तब भी हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं। तो ये वास्तव में शुद्ध भक्ति के लक्षण है। और जो श्रीमद् भागवतम के में बताया गया है कि वास्तव में जो शुद्ध भक्ति है, अगर कि वास्तव में किसी की कोई भी इच्छा क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी कामना क्यों ना हो, यदि हम श्री भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है। यस प्रभुजी। Okay. You get ready your questions. I take 1 or 2 questions. But before, I'll give you the secret of the pure devotion. You see, why it's so important? This is the ultimate level. Because when a devotee is purely surrendered to Krishna, he has this pure, unalloyed devotion to Krishna, he purchases Krishna. Therefore, Krishna do not give pure devotion easily to anybody. Because once you have this pure devotion, you actually can control the one who controls everything. You see? You control the one who is the Supreme Personality of God. You control the Lord by your devotion. So Krishna don't give pure devotion very easily. So the devotee, when he becomes, in a level of pure devotion, he purchases the Lord with that devotion. And the Lord becomes tied to the devotee, just like Prahlad Maharaj. Look how the Lord protect Prahlad Maharaj in so many ways. Okay, he was there, all the time protecting him against this demon father. And that is the secret of the pure devotion. You purchase the Lord with that devotion. So it's not awarded very easily. And then you prepare your questions. I take 1 or 2 questions and then we'll be finished for this section, this podcast for today. Go ahead, Prabhuji. Yes. हम एक क्लास के आ चुके हैं और हम जो शुद्ध भक्ति का जो महत्व है, इसके रहस्य को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी, कि जो भगवान के प्रति जो शुद्ध भक्ति है वो किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा द्वारा नहीं है। मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई मोटिव नहीं है, जैसे हम स्टार्टिंग से अभी तक देख रहे हैं। पर शुद्ध भक्ति वास्तव में
ऐसे ही नहीं मिल जाती। भगवान ऐसे ही किसी को नहीं शुद्ध भक्ति दे देते, क्योंकि शुद्ध भक्ति मिलना मतलब हम वास्तव में भगवान को नियंत्रण कर रहे हैं। मतलब श्री भगवान कृष्ण जो परम नियंता है, उनका सब जगह कंट्रोल है। तो वास्तव में अगर हम कोई शुद्ध भगवान किसी को शुद्ध भक्ति है देते हैं, तो वास्तव में भगवान उसके प्रेम के वश में हो जाते हैं। मतलब भगवान उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। तो ये वास्तव में बहुत ही मुश्किल है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, क्योंकि भगवान ऐसे ही किसी प्रकार को किसी भी ऐसे किसी को भी शुद्ध भक्ति नहीं प्रदान करते हैं। जैसे कि हम प्रहलाद महाराज जी का देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी को भगवान सभी ओर से भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे। और ये वास्तव में बहुत ही रहस्यों में भी बहुत ही मीन्स इट इज द सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट कि ये जो शुद्ध भक्ति है, भगवान ऐसे किसी को भी नहीं प्रदान करते और बहुत ही रेयर है। और हमें केवल और केवल भगवान के भक्तों की सेवा करने से अब वो प्राप्त होती है। यस प्रभु जी। So if there is a couple questions I can take right now, यस or we प्रभु जी। have, yes, I have one question प्रभु जी। yes. Hare Krishna Prabhuji, then Pranam. So Prabhuji, my question is regarding, as you explained in the entire class, the importance of the Shuddh Bhakti, the pure devotional service, uh, and as you mentioned in the end that this cannot be avoided so easily. So my question is, how one can get the pure devotional service easily? Okay. You're lucky because you have a Gurudev, you have Srila Prabhupada, you have Lord Chaitanya. But the mercy of Lord Chaitanya, we become the world, the universe of Krishna becomes available to us. But the mercy of Lord Chaitanya. I'm a foreigner. I'm born in a place nobody knew about Krishna. Nobody knew about Bhagavad-gītā, Bhagavatam. And I have books of yoga, never get close to understand what Krishna consciousness is. Not even close. And Prabhupada came in Lord Chaitanya and immediately become very easy to understand. It become easy to develop, affection for Krishna. I cannot tell that I have love for Krishna. I just go as far as saying I have a little affection. I don't see myself as very advanced. So, but I like Krishna. It's a naughty boy, and his pastimes, everything is very very dear in my heart. His devotees, it's amazing. His holy places. We travel in India. We went so many places in safari with the Jataka Maharaj, and so it's very enlivening. It's like I have found memories. So in that sense, our devotion is developed. Only Krishna can tell what kind of devotion I have. I don't pretend to say I have any devotion, but devotion is there, you see, and we grow that. It's like a little fire. You can fan it and it can become a big fire. Fire is fire. So we have that fire of devotional service and we grow this fire by following Gurudev, follow Srila Prabhupada, stay in the path of devotional service in association with the devotees. See, then you become pure to get to the position of uh, the steps, in devotional service. First, you associate with devotees, then you develop nishta, now attraction. Then you have, your attraction solidify, and it becomes a devotion, you see, and you keep, developing your devotional service until you become pure devotion. See, so you go to the process of devotional service. You want to know how much devotion you have, you see how much you detach from the material things that previously we were very attached. And then you can see
where you stand. Right? Any more? Yes, Is Prabhuji. that good? Any more questions? Prabhuji, one last question, Prabhuji. Yes, yes. Prabhuji, as I see when in my life that I've seen that whenever I practice devotion, sometimes if I get something good names or means means my question is regarding how to continuously remember about Krishna. Actually, whenever I get something uh, good or bad thing means in my life, uh, I get a little forget about Krishna for that moment, particular moment. I am not able to remember Krishna continuously. So my question is regarding this. So how can I remember Krishna continuously? First, Krishna right now is around you, right now as we speak, but we cannot see. So you train your eyes to see different energies. There are the energies of Krishna. Besides down the sun, the moon, the air, the water, Miyako, Nalovayu, all these energies that comes from Krishna. You can see Krishna in different parts of your life, see, and in different things that happen to you. He has, you see, it's not that it happened because of Krishna, it's happening so you can uh, learn something from that experience. That is Krishna. You see, that learning process is Krishna. Not that something happened to you, but when happened, you learn something from that. Because if something happened to you, you don't learn anything. There was a lost opportunity. I have a lot of things happen to me, good and bad. All the bad ones, was hard, was very hard. But it is a lesson, and you learn, and you move forward. And Krishna is there with you. Krishna said, I won't let you down. I'll be with you all the way. And you have firm faith, the Lord will be there. And He will be there in the heart, with the devotees around you, with situations, you see. And when you see Krishna, He's there, He has your back, like we say in America, Krishna has your back, then you learn to see Krishna everywhere. See, and one day I'm gonna actually give a podcast in the process of seeing Krishna everywhere because everything is made of Krishna energy. So you decodify the energies and you see that Krishna is there in different things. Like if I see a watch in here, what is a watch? It's keeping track of time. What is time? Time. Krishna said, I'm time, the destroyer of the worlds. So you can start a whole thing thinking how time, is manifesting in this world, how we are controlled by time in different ways, in a way controlled by Krishna, because Krishna is time. You see, so it is a process of discovering, and that discovering give excitement for the soul. So you should be feeling excited that this is happening. You should look that excitement, look forward for that excitement to discover things that is already there in front of the face, but we're not seeing. In front of our face, but we're not seeing. Because all it takes is a little angle, it's a little perspective. Then you can discover things. I see some museums, they have these artists. It's amazing. It looks like a piece of junk, a lot different things and parts of different wood and iron. It looks like nothing. But once you move, it's a whole picture in there. You see, that it's amazing. It's a face, eyes, beautiful, everything well done. But if you move the perspective a little off, all you see is a bunch of, piece of wood, paper, and you can see anything nice. I think some of you will be seeing, sometimes they show in Facebook like that. So it's perspective, and you see perspective. Is that good? Yes, Prabhuji. I Practice. see. They say practice makes perfect.
have to practice, right? Practice. Yes, yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. You have to be strong. There is this Japanese lady, she's a fighter. What you call this fight? This this is fight with the legs and and with the hands, Yeah, and Jackie Chan, I guess. not like that. It's you go in an enclosure and you fight. She's the women champion, and she has one thing. She has a kick that is like better than a mule. She just win by the kicks, the legs. But you see her training the whole day. She's walking one leg, little jumps going around, and on the leg that's up, she keeps kicking in the air, practicing. Then she changed legs and kick with the other leg the whole day. It's like, so focused. Are we focused that way to understand how Krishna is manifesting around us? This is the question. You see, are we focused that way? And because she's persevering and she's not giving so much work, even when she's off the gym or off the fighting, she's just normal life. It's going around one leg, kicking one leg, the other leg. You see, she's so practicing so intensely, she gets results. She becomes a very good fighter. People are scared of her. With the legs only, she finished the other women. So we have to be like that. So persistent. Maya will be scared of us. Won't come near us. We kick with Shastra. Ah. Okay. So thank you very much. What happened to all, to Neha, to Antara? What happened to all the crew? Huh? Hare Krishna, Prabhuji. I think their exams are going on. Okay, I understand that. Okay, fair enough. So thank you. Prachai, you Yes. good? You have any question? No, Prabhu, not right now. Okay, thank you. Kudeep is